Hello friends, welcome my channel Base Guide. Today I am starting my class voltage of power plug or point. Number 1 neutral to phase, number 2 neutral to earth, number 3 earth to phase. Neutral to phase 220 volt AC. Require voltage 220 210 voltage to 230 voltage. So 220 voltage AC voltage is okay. Neutral to earth 2 volt AC. Require voltage 0.1 volt AC to 5 volt AC. So 2 volt AC is okay voltage. Okay earth voltage. Earth to phase 2 to 2 volt AC. Require voltage 220 volt AC of phase and 2 voltage of earth equal to 2 to 2 voltage AC. So it is okay. Power plug. It is power plug. It is multimeter. Now neutral to phase voltage meter reading. DC वोल्ट मल्टीमीटर की ए कॉमन पॉइंट है और ए प्लस पॉइंट है और इधर डीसी वोल्टेज है, इधर एसी वोल्टेज है. एसी वोल्ट की हम 600 रेंज में मीटर नॉब के रखे हैं. और अब हम न्यूट्रल टू फेज वोल्टेज मापने जा रहे हैं. कॉमन वोल्टेज नेगेटिव न्यूट्रल में टच कर रहे हैं और पॉजिटिव वोल्टेज फेस पे टच कर रहे हैं. तो इधर मीटर रीडिंग उठ रहा है 2 to 10 वोल्ट AC. सेकेंड न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज मीटर रीडिंग और इट इज़ पावर प्लग. सो कॉमन पॉइंट मल्टीमीटर के कॉमन पॉइंट हम कनेक्ट कर रहे हैं न्यूट्रल वोल्टेज में एंड प्लस पॉइंट कनेक्टेड टू अर्थ वोल्टेज. So now it is showing 2 volt AC. So it is okay. Second earth to phase volt meter reading. It is power plug. It is multimeter. मल्टीमीटर के कॉमन पॉइंट हम कनेक्ट कर रहे हैं अर्थ पॉइंट में और मल्टीमीटर के प्लस पॉइंट हम कनेक्ट कर रहे हैं लाइन में. नाउ इट इज शोइंग 2 वोल्ट AC. सो अर्थ वोल्ट टू फेज वोल्ट मीटर रीडिंग वोल्टेज इज 2 वोल्ट AC. इट इज़ ऑल्सो ओके. तो फ्रेंड्स ये रहा आज का क्लास. प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप लोगों का कैसा लगा. अगर आप लोगों का मनपसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.